So today the topic is hematology. It will be quite interesting, I feel, because in these online classes, the every chapters of medicine is designed in such a way that we should cover the physiology, pathology, and medicine together. But the interesting fact is, from the hematology, very less number of questions are coming in past few years from the physiology and pathology. So in that case, I believe that the most of the part will be covered by medicine, but the essential questions and essential topics that is often coming in the examinations from the physiology and pathology part, I'll try to cover all this within these 3 hours. Although it's quite difficult, but I believe that please support me if I get a bit fast. Then ask me to slow down so that I can slow it down by myself. Thank you. I think somebody's microphone is on. Please unmute your. Please mute yourself. Okay, so from the very basic of the physiology, that mean corpuscular volume and mean corpuscular hemoglobin concentration, these terms are not new to you. Okay, that you have been reading this from the first year of your BHMS syllabus, but actually some of the questions that are quite common in the entrance examinations that I'll try to cover irrespective of how much you know about this or not. So in the very beginning, I'd like to just catch your attention on this basic phenomena that we are studying hematology. Hematology is nothing but some of the blood cells, plasma, the inner surface of the blood vessel, and some of the reticuloendothelial organs like liver, spleen, and bone marrow. So this is the whole of the hematology. So hematology doesn't include any kind of cardio or vascular phenomena. So I think that we should limit ourselves in the blood cells, plasma, and reticuloendothelial organs. So in that case, and also the lymphoid organs. So in that case, we first need to know the morphological structure and the functions of various cells. And among those, the RBC is most important one. Because in the homeopathy entrance, especially, most of the questions are coming from the RBC patterns and RBC disorders, and a little bit of the hematological malignancies and that coagulation problems. So MCV is nothing but related to the RBCs. MCV is mean corpuscular volume. It is the mean volume of each and every RBCs. So actually, why it is important? Because it is actually determined whether. सर हिंदी में थोड़ा सा सर ओके, अच्छा ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मिक्सचर करके बोलता हूँ, बिकॉज सारा चीज़ तो हिंदी में लिखा हुआ नहीं है स्लाइड में, तो इट्स इन इंग्लिश, so you have to bear with me. सर मिक्सचर मिक्सचर ओके ओके, तो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, इसका हिंदी नहीं पता भाई. तो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम एक्चुअली कुछ नहीं है. वो क्या है कि एक आरबीसी के जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम बोलते हैं. वाई मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम? बिकॉज कि ब्लड स्ट्रीम में हमेशा मैच्योर आरबीसी नहीं होता है. समटाइम्स देर आर सम इमेच्योर आरबीसीज ऑल्सो. समटाइम्स वहाँ पे कुछ एट द एंड स्टेज ऑफ द आरबीसीज लाइव आफ्टर 120 days, कुछ टाइम ऐसा होता है कि आरबीसीज की जो साइजेस हैं वो साइजेस थोड़ा स्फेरिकल हो जाता है, क्योंकि वो तभी स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होने की टाइम आ चुका होता है उसका. तो इसीलिए डिफरेंट साइजेस होता है, लेकिन वो डिफरेंट साइजेस एक अलाउेबल रेंज में होनी चाहिए. तो वो रेंज हम वॉल्यूम के लिए, फॉर एवरी आरबीसीज के वॉल्यूम के लिए, वो एक्चुअली मेजर किया जाता है एफएल से और femtoiliters. FL is nothing but femtoiliters. It's a very tiny range of measurements for the volume. In that case, the normal mean corpuscular volume is 79 to 93.3 femtoiliters. ये कई बार क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द नॉर्मल MCV. अगर वो 90 भी रहे, 84 भी रहे, 86 भी रहे, तब भी वो करेक्ट आंसर है. तो 79 to 93.3 femtoiliters is a correct answer. And the next one is normal mean corpuscular volume जब होता है एक RBC का, then it is known as normocyte. You all are well conversant with that word, that is normocyte. Cyte means cells, normo means normal range.
और इंक्रीज अगर हो जाता है ये 93.3 के ऊपर अगर हो जाता है देन इट इज नोन एज मैक्रोसाइट. मैक्रोसाइट इज नथिंग बट द हायर साइज ऑफ द आरबीसीज. एंड उस टाइम पे जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, एक आरबीसी बड़ा होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? प्रॉब्लम यही होता है कि जो स्प्लीन के माइक्रोवास्कुलेचर है जहां से आरबीसी गुजरता है वहां पे जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो एक हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है. तो इसीलिए साइज आरबीसी की जब बड़ा होता है 93.3 के ऊपर होता है तो प्रॉब्लम यही होता है. And decreased MCV is microcytes. Microcytes are nothing but the small RBCs, really small RBCs, less than 79 femtoiliters. And वो equally और एक important problematic चीज़ होती है. तो इसीलिए ओके अच्छा, एच सी ऑनलाइन में क्लास अभी चल रहा है, फिर भी सब लोग ये डिजायर स्वीट, एग्रेवेशन स्वीट, एम्यूलरेशन ये सब क्यों पोस्ट कर रहे हैं? आस्क एवरीबडी टू अटेंड द क्लास, नॉट टू अटेंड द व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑल. Okay, so for the decreased MCV and increased MCV, just another thing, mean corpuscular volume के जो माने इट इज़ द लिटिल ब्रदर ऑफ मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम. क्योंकि ऑफन क्या होता है कि आप लोग जब कोई ब्लड रिपोर्ट देखोगे वहाँ पे पेरिफेरल फिल्म बोल के एक नीचे लिखा हुआ होता है. उस पेरिफेरल फिल्म में देखना एमसीवी के साथ एमसीएचसी रिपोर्ट किया होता है, क्योंकि एमसीएचसी एक ऐसी कॉम्प्लीमेंटरी वाइफ ऑफ एमसीवी है जो हमेशा एमसीवी के साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन आफ्टर द एमसीवी, नॉट बिफोर द एमसीवी. ओके, तो एमसीएचसी इज नथिंग बट द हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द आरबीसी, कि कितना हीमोग्लोबिन हर एक आरबीसी के अंदर है. वो पिकोग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से होता है, तो इट इज नॉर्मल रेंज इज 32 टू 35 पिकोग्राम पर डेसीलीटर. तो एमसीएचसी, नॉर्मल एमसीएचसी इज आरबीसी इज नोन एज नॉर्मोक्रोमिक. आई मीन क्रोमिक मीन्स, क्रोमा मीन्स द कलर. तो नॉर्मल अगर कलर ऑफ द आरबीसी, नॉर्मल रेंज अगर एमसीएचसी की हो तो वो नॉर्मल कलर को रिफ्लेक्ट करता है. अगर 35 से ज़्यादा हो तो हाइपर क्रोमिक हो जाता है. आई मीन्स उसकी कलर थोड़ा डार्क हो जाता है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा है या फिर प्रेसिपिटेट कर गया होगा. एमसीएचसी अगर कम होता है इस नोन एज हाइपोक्रोमिक एनीमिया. तो अभी देखो ये क्वेश्चन जब आता है कि एमसीवी एंड एमसीएचसी, व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एमसीवी एंड एमसीएचसी, कोई भी एनीमिया लाइक आयरन डिफिशियंसी एंड एनीमिया में रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, व्हाट इज दैट. और जब नॉर्मल कोई ब्लड रिपोर्ट होता है उसमें लिखा हुआ था नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, कभी ये नहीं लिखा हुआ था नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक. ऑलवेज इट इज रिटन दैट नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, बिकॉज सबसे पहले एमसीवी रिपोर्ट किया जाता है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, कि उसकी सेल की साइज